respected our esteemed resource person, Mona Lisa Singh Madam, and my dear learners. First of all, I extend my heartfelt thanks that you have attended this class, and in spite of a busy schedule of Mona Lisa Madam, she has given consent to conduct the online class. So, uh, before proceeding the chapter, I just want to give some introduction about our resource person. Our resource person of this BEVAE 181, that is known as Environment Studies in English paper. Our resource person is Mrs. Mona Lisa Singh. He is working as a lecturer in this institution, and he is associated with our IGNOU Study Center. And she is very sincere, dedicated, punctual. I assure you that she will clarify all your doubts, and if any doubts may come, you can interact with Madam. And we have already given the phone number and email. You can make contact with Madam. So, as a number of learners have already joined, so I welcome to all the learners as well as our resource persons, and very few ideas about environment science in English, that we will conduct 4 classes, that is 4 blocks, and as you know, that is 4 credits. So in 1 credit we have taken into consideration in 1 hour, that is known as 1 block. So in total you will take, that is 4 blocks or 4 days, and the classes will be started from 19 to 22, and that is a 1 hour duration. So the learners should come to the or attend the class in exact time, and the courses are very vast. So you should go through the books and thorough read to the books, and Madam will clarify your doubts. So it is my earnest request to all the learners, you should attend the class in time, that is 6 o'clock, 6 p.m. and the classes will continue 7 p.m. So within this time, Madam will clarify all the doubts, and she will try at his best to engage the class very effectively. Thank you, Madam. I extend my thanks and gratitude to you as well as the learners. As you know, the learners are different parts of the state of Odisha. They are not the learners of our Kendrapada Study Center. They are the learners of BJP, and that is Anugol, Barampur, Sambalpur. That means all the learners have go through, or all the learners will learn from this online class. So I think that is they have allotted us to conduct the online class. So all are requested to come to or to attend the class at sharp 6 o'clock, so that Madam will take or engage his time, and she may takes more time, but you should attend the class at proper time. Thank you, Madam. And before proceeding the or going to the topic, we just take a screenshot of the program. So I just want to take the photograph or screenshot of the program. So all the learners are requested to open their video, and I will take a snap of the screenshot of the program. Then classes will be started. I think all the learners have written their enrollment number in chat box. Okay, just a minute. In environmental science or in environment
and science. In English paper, there are 4 classes. Then there are 4 blocks. So in these 4 blocks, madam will complete the entire course. So you should go through the books. Now I will request our madam to continue the class, and that is a bilingual. Thank you, madam. You are welcome, and learners are also welcome. And now I request to our madam to start the class. Thank you, madam. Thank you, sir, and good evening to all. So our first block is an introduction to environment and environmental studies. So before go through the detailed topic, first, what is environmental studies? This environmental studies is a discipline or is a topic that gives us an idea about the environment, environmental interactions, environmental problems that generally found nowadays, and it also equips us with such knowledge to overcome or to solve all those problems. So this block contains 3 units, and that is first unit is our environment, second unit is ecosystem, and third unit is major ecosystem. So the first unit is that is our environment. So environment, this the literary meaning is our surrounding. Surrounding means surrounding of any organism. It may be human being, it may be any animal, it may be any plant. So when we consider any one of the organism, then surrounding that organism is known as that environment. Okay. So this environment contains 2 types of factors, that is living factors and non-living factors. Living factor, it means either a human being or any type of plants or animals or any type of microorganisms also. And non-living factors means that is soil, water, air, any type of materials that found surrounding us. So this environment, if we define particularly, the definition is the sum total of living and non-living components that influences an event surrounding an organism. Okay, so these components of environments are categorized into 2 types, that is living and non-living. And if we consider about the types of environment, then it is also categorized into 3 types, that is natural environment and man-made environment. So natural environment means that it's naturally present. ଯେକୌଣସି ଆମେ ଯାହା ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖୁଛେ ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟତଃ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅଛି. But when we consider about man-made environment, it means man changed the environment. ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ environment କୁ ସଜାଡୁଛୁ ଆମ ହିସାବରେ ବା ଆମେ ତାକୁ ସଜଉଛୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ man-made environment. It may be human modified environment or human made environment. Human modified means already the environment, the natural environment is present there, but according to its wish, it may change some factors, like your any type of parks or sanctuary. So these are the examples. But human made means that is industrial sector or crop field or such type of any type of dam, town, etc. So that is the types of environment. When we consider about types of environment, human activities play an important role. କାହିଁକି ନା ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ରହୁଛି ଯେ ମଣିଷ ପ୍ରାୟତଃ ଯଦି ଆମେ ପାଷ୍ଟ କୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ either human being or any other organism, they adapt themselves to the environment. ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଖାପ ଖୁଆଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମଶଃ ସେଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା. So the evolutionary process ରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିଲୁ, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲୁ,
तेणु डेभलपमेंट जते हला साइंस एंड टेक्नोलॉजी रे डेभलपमेंट हला आमे अनेक जिंस जानिलु तेणु आम हिसाब रे आमे चलिबा को चाहिलु ताको चेंज करबा को चाहिलु ताको सजेबा को चाहिलु जत पई कि गोटे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट हला एंड दैट इज नोन एज योर ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट रे जो डिफरेंट फैक्टर्स रोचती दे आर इंटरैक्ट विथ ईच अदर so sometimes maybe some positive results are found but sometimes some negative results are also found when the negative results are created then it becomes problem for the whole society and environment also interaction ta ame kette karuchu kemiti karuchu je setire balance ta maintain hochi ki nahi जदि आमर एक्टिविटी टा एक्सेस हे जाउची सेई जगह रे ही नेगेटिव इफेक्ट टा अधिका देखा जाउची अदरवाइज जदि आमे गोटे बैलेंस मैनर रे हमर चेंज करंतु तार सेटा एते प्रॉब्लम क्रिएट करंता नाही वर्तमान जदि एनवायरमेंटल स्टडीज को फोकस दिया होची जे कोन से गोटे स्टडी सेंटर रे बा जे कोन से हमर क्लासरूम रे बा अन्य विभिन्न स्थान रे इंपोर्टेंस दिया होची काहे कि दिया होची बिकॉज़ नाउ इट इज different types of environmental problems are arises and those problems are arises due to our activities जे to human involvement ता बढ़ी जाउची different types of problem मध्ये बढ़ी जाउची but in some extent we are ignore about that all those problems are arised due to us or our activities either locally or nationally और ग्लोबली तो जेहेतु आमे किछि एक्टिविटीज करूछु आम इच्छा अनुसार किंतु आमे जानि पारनु जे एई गोटे छोटो एक्टिविटीज ता एई भली गोटे प्रॉब्लम क्रिएट करियो बोली तो प्रॉब्लम जेते क्रिएट हेई जाउची डिफरेंट लेवल ले सेटा डिस्कशन होउची ता परे रिसर्च एनालिसिस ए सब हमकु रिजल्ट दोउची कोन ऑलमोस्ट ऑल दोस प्रॉब्लम्स आर अराइज ड्यू टू आवर एक्टिविटीज So if we want to sort out all those problems, then I mean निश्चित भाବରେ ଆମର activity ଜାଣିବା ଦରକାର how our single activities can create different types of environmental problems. जदि हमें ताकू sort out करिया चाहुचे involvement or human involvement is necessary. Each and every person's involvement is necessary because Earth is the only planet where till now अन्य जगह रे बहुत रिसर्च चलीची तथापि वर्तमान सुधा पॉसिबल है नाही लाइफ टा पॉसिबल है नाही अन्य कोनोसी प्लैनेट रे ठीक भाबरे लाइफ टा पॉसिबल है नाही and the life टा पॉसिबल केवल है छि अर्थ रे and it is becomes possible due to some important factors a main होछि तार एनवायरनमेंट जदि हमें सेटा को ही चेंज कर दबा ताले निश्चित भाबरे गोटे पीरियड आसीबो हमर सर्वाइवल मध्ये गोटे क्वेश्चन मार्क हेकि रहिबो तले हमें एटा पढिबा बा जानिबा केवल जो प्रॉब्लम सॉल्व करिया से कथा नै हम निज सर्वाइवल पई मध्ये हम एटा को जानिबा दरकार बा हमर एक्टिविटीज को हम चेक करिबा दरकार बाय नोइंग एवरीथिंग how the environmental problems can arise in our day to day life by our activities so that we can check it and check कले ही सेटा सॉर्ट आउट हेई पारि तेनु एनवायरनमेंट रो निश्चित भाबरे किछि सिग्निफिकेंस रहउछि जदि एनवायरनमेंट ता चेंज होछि फॉर एग्जांपल जनरली वी आर डिपेंड्स अपॉन एयर हमें एयर ऊपर डिपेंड्स करछु बिकॉज़ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर अस अब वर्तमान तो कोरोना पीरियड रे जतन देखुछ केते प्रॉब्लम देखाउछि ए ऑक्सीजन पई बट oxygen and carbon dioxide level not in a balanced manner till now वर्तमान पीरियड जदि देखिबा कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नेसेसरी हम पई मध्ये नेसेसरी काहे कि ना हमें डिपेंड्स करछु प्लांट्स ऊपर एंड प्लांट्स आर डिपेंड्स अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर सर्वाइवल सो कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द एनवायरनमेंट even हम यदि टेम्परेचर कथा कहबा टेम्परेचर बैलेंस इज आल्सो मेंटेन बाय द कार्बन डाइऑक्साइड किंतु वर्तमान ट्रेंड होची कोन एक्सेस हे जाउची कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेवल ता कमी जाउची
ताले एनवायरनमेंट रो जेकोसी गोटे पार्ट को देखिबा हमें गोटे एग्जांपल नेले ओनली द एयर सेंति तार अन्य विभिन्न पार्ट जहां पर हमें डिपेंड करछे काइना हमें ऑलरेडी कहले जे हमर चारि पाखरे जहां भी अछि हम ता पर डिपेंड करछे ताको यूज करिके ही हमें सर्वाइव करछे तो सेति पई हमें एनवायरनमेंट को जदी सेफली रखिबा आमो सर्वाइवल मध्ये पॉसिबल अदरवाइज इट बिकम्स ए क्वेश्चन तो एनवायरनमेंट रो निश्चित सिग्निफिकेंस रोची हमरो लाइफ रे सेति पई हमें तार विभिन्न जो टॉपिक गुडा को रहिछि सेडा टिके टिके देखिबा तार तार गोटे पार्ट रोची जे ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल different types of relationships are there I already कहली some positive relationships are there some negative relationships are also there for example हमें plantation करछे हमें गछ लगेलु माने सेटा निश्चित एनवायरनमेंट को गोटे पॉजिटिव रेस्पॉन्स देलु किंतु डिफॉरेस्टेशन टाइम रे हमें नेगेटिव रेस्पॉन्स दोछु हमें गछरे पानी दोछु बढ़ेवा पई बा अन्य जहा ताकू प्रोवाइड करछु सेटी पॉजिटिव इफेक्ट रहउची गछ प्रति गछ भी हमको बहुत जिंस दोउची ऑलरेडी हमें जानछु साधारण भाबरे बट when deforestation happens due to any region any part of the world then it creates different types of problems for us then सेठी आमे जेंति नेगेटिव इफेक्ट पकेलु एनवायरनमेंट रो गोटे पार्ट ऊपर एनवायरनमेंट मध्ये रिटर्न गिफ्ट हमकु देला बस एभली गोटे नेगेटिव इफेक्ट पकेला तो सेथि पई ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट रिलेशन ता गोटे म्यूचुअल रिलेशनशिप हबा दरकार और सेटा गोटे प्रॉपर्ली मेंटेन हबा दरकार यदि हमें तार लिमिटेशन जानि बानी आ विभिन्न टाइप रो एक्टिविटीज करबा जोटा कि इफेक्ट पकेइबो एंड दैट इज आल्सो नेगेटिव इफेक्ट ताले निश्चित सेटा प्रॉब्लम क्रिएट करिवो तो से रिलेशनशिप को जदी देखिबा तीनटा टाइप रो नॉर्मली हमर कांसेप्ट जहा अछि there are three types of relationship are generally found first one is determinism second one is possibilism and third one is environmentalism so determinism जोटा कहूचे determinism is the term or concept that developed by German geographer Friedrich Ratzel and according to whom this concept is that nature controls human preliminary stage रे बा हम जदी evolutionary process देखिबा तले सेते बेले बहुत आगुरु नेचर हमको सिलेक्शन करथला नेचर कंट्रोल करथला ह्यूमन बीइंग केना हमर मैम प्लीज हिंदी में बोलिए, हमें समझ नहीं आ रहा है मैम। ओके ठीक है, हम हिंदी में बोलते हैं। सो नॉर्मली नेचर कंट्रोल्स ह्यूमन बीइंग। इट मीन्स जब हम पास्ट को देखेंगे तो क्या होता है, पहले तो हम अडॉप्ट करते थे नेचर को, नेचर जो भी देता था हम उसी में हो जाते थे और उसी को लेके चलते थे। सो दैट कंसेप्ट इज नोन एज नेचर कंट्रोल्स ह्यूमन and almost you know about the natural selection. We have some concept that natural selection means nature select the organism. जो पावरफुल होता है वो सरवाइव करता है, जो पावरफुल नहीं होता है वो सरवाइव नहीं कर सकता है। जो अडॉप्ट करता है वो सरवाइव करता है, जो अडॉप्ट नहीं कर सकता है वो सरवाइव नहीं कर सकता है। So that concept is known as your determinism. Next one is possibilism. Possibilism means when science and technology develops, with that knowledge, human being always try to change its environment according to their wish. And at that time, human being, जनरल मनुष्य
सोचता है कि वो सब कुछ कर सकता है, नेचर को वो कंट्रोल करने को कोशिश करता है. So that concept is known as your possibilism. Third one is environmentalism. Environmentalism means this concept is a mutual understanding between human and environment. Environment helps the human being as well as human being also help the environment. So that mutual relationship is known as your environmentalism. Okay, so this is the three types of relationship between human and environment. From all those three concepts, the concept of environmentalism is generally acceptable because this is a balanced relationship. Okay. So next is concept of sustainability and sustainable development. So what is the meaning of sustainability? Sustainable means maintainable, maintained. So sustainable development, this concept explained by Brundtland Commission, according to whom? According to which sustainable development is the development that meet the needs of present generation without compromising the ability of future generation to meet their needs. For example, हमारे पास 5 किलो राइस है, आज हमको जोर से भूख लगता है. अगर हम आज 2 किलो राइस खा लेते हैं और उस 5 किलो हमें 5 दिन चलाना है, तो अगर आज 2 किलो हम खा लेते हैं तो 5th डे को हमारे पास कुछ नहीं रहेगा खाने के लिए. So that is not sustainable concept. Sustainable concept क्या है? हम आज खाएंगे, भले ही आधा पेट खाएं, लेकिन कुछ बचा के रखें फ्यूचर के लिए. It means meet the need of present generation without compromising the future generation. जो कुछ भी आज नेचर हमें देता है और नेचुरल रिसोर्स है और नेचर को हम यूज करते हैं, वो इस तरह से यूज करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी डेवलप करके आज को जो रिक्वायरमेंट है हम उसको देखेंगे, फुलफिल करेंगे, लेकिन कुछ बचा के रखना चाहिए हमारे फ्यूचर के लिए. अदरवाइज in the future may we face different types of problems. Okay, so this concept is sustainable development. जो होना चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा पास रिसोर्स नहीं होगा ठीक तरह से, तो जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा. जैसे हम अगर एग्जांपल ने आइदर एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेस, दैट इज मिनरल रिसोर्स or coal or petroleum or any other product, जो अमाउंट है वो बहुत जल्दी से खत्म हो जाता है, लेकिन जिस तरह से वो होना चाहिए वो नहीं होता है. इट रिक्वायर्स सम टाइम, लॉट ऑफ टाइम. इसलिए अगर जल्दी खत्म हो जाता है तो हमारे फ्यूचर के लिए नहीं रहेगा. और होगा क्या, ऐसे ही हम जिसको भी क्लेम करें, जो रेट है वो बढ़ता ही जाएगा. तो जिसके पास पैसा होगा वो यूज करेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो यूज नहीं कर सकेगा. ओके, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट मीन्स वी मस्ट थिंक अबाउट द natural resource, everything, not only about natural resource, everything, our activities, natural resource, etc., pollution जिस लेवल से हम करते हैं,
तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी कोरोना को ही ले लो और किसी और प्रॉब्लम्स को ले लो। Okay, so when we consider about sustainable development, generally give focus to environment, society as well as economy. सबको देखना चाहिए और सबको देख के अगर हम प्रॉपर प्लानिंग से काम करेंगे तो वो फ्यूचर के लिए हमारे लिए कुछ सेफ होके रहेगा, हम उसको इजीली यूज कर सकेंगे। ओके, सो to achieve sustainable development, what are the basic principles? Principles is, first one is slow down population growth, क्योंकि पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, रिक्वायरमेंट उतना बढ़ जाएगा, इसलिए स्लो डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड इज रिड्यूस पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड थर्ड वर्ल्ड डेट, ये सबको भी हमें देखना चाहिए। थर्ड वन इज मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल, जिस तरह से फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं तो क्या होता है, जो जेन्युइन नेचुरल फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होता है। एंड व्हेन इट यूज सम पेस्टिसाइड्स, those pesticides not only kills the pest of those plants, it also kills the pest of soil, because in different way those pesticides are also comes in contact with soil. So the natural organism that found in soil generally increase the natural fertility, they also becomes dead due to that use of pesticides. In that way overall soil quality becomes degraded, इसलिए we must give focus to bio product. बायो प्रोडक्ट यूज करने से सस्टेनेबिलिटी मेंटेन होगा, नहीं तो ये केमिकल्स जो है हम अगर ज्यादा यूज करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उसको हम सस्टेनेबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सॉइल क्वालिटी है वो बेकार हो जाएगा। फिर जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक योर यूज ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, एक्सेस अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स, एक्सेस अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन तो ग्रोथ होता है, उसको खाना प्रोवाइड करने के लिए हम आर्टिफिशियल हार्मोन, आर्टिफिशियल डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हमें ऐड करते हैं, which create different types of problem. So bioproducts must be used. Organic farming means totally pollution free and environmental friendly farming process is known as your organic farming. So organic farming करते हैं तो वो उससे सस्टेनेबिलिटी आता है एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड अदर हैबिटेट, जो नेचुरल हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, आइदर फॉरेस्ट हो, वाटर हो, सॉइल हो, इस सबको हमें कंजर्व करना है। मेक वाटर एंड एनर्जी सस्टेनेबल, वाटर एंड एनर्जी बोथ उससे भी सस्टेनेबल मैनर में हमें यूज करना चाहिए। देन रिड्यूस वेस्ट जनरेशन, वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है उससे हमें रिड्यूस करने का चाहिए, so that it decreases the problem of pollution and the many other problems also, side by side problems. Okay. Next is multidisciplinary nature of environmental studies. So environmental studies is a topic or a discipline that gives us knowledge about the environment and environmental problems. So when we want to sort out all those environmental problems, what happens? We have to connect this topic with different discipline. You can take any type of example. For example,
any disaster happens, जो flood है or earthquake है or any type of disaster, you can take any type of disaster. So when disaster occurs, it degraded different types of materials. जो लॉस हमारा होता है उसे अगेन रिप्लेनिश करने के लिए हमें पैसों की जरूरत होता है. So in that way, it depends upon economy, or our economy is affected due to that factor. Again, society is also disturbed. Sometimes any type of disaster create some psychological stress, and we are suffering from different type of psychological trauma. At that case, that discipline, or if we want to properly sort out those problems, then we have to connect this topic with psychology, with sociology, with economy, and also atmospheric science. अगर हम चाहते हैं कि ये सब रिड्यूस हुए, तो हमें साइंस के साथ भी रिलेशन रखना चाहिए और साइंस का नॉलेज होना चाहिए. ये सब का भी जो आर्ट्स के टॉपिक है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स, इसका भी नॉलेज होना चाहिए. मैनेजमेंट की भी नॉलेज होना चाहिए. So in that way, this topic is related to different disciplines, due to which this topic is known as your multidisciplinary. So this is the nature or multidisciplinary nature of environmental studies. Next is, what is the importance of environmental studies? Already we know that environmental studies gives us knowledge to sort out different type of environmental problems. So what are the points? That is, first one is environmental issues are of international importance. Then different type of problems, explosive increase in population, need for an alternative solution, इस सब के लिए need for wise planning and development. So इस सब के लिए हमें environmental studies का आइडिया होना चाहिए. इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस तो होता है, नहीं होता तो हम यहाँ डिस्कशन क्यों करते हैं? इसका इम्पोर्टेंस है इसलिए क्योंकि हम डेवलपमेंट जब करना चाहते हैं तो एनवायरनमेंट को प्रायोरिटीज देना पड़ता है. एनवायरनमेंट है तो हम है, नहीं तो नहीं रहेंगे. इसलिए हम एनवायरनमेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं. अगर एनवायरनमेंट ठीक रहेगा तो हम भी सर्वाइव कर सकेंगे इजीली. ओके, ये हुआ आपका फर्स्ट जो यूनिट है. सेकेंड यूनिट क्या है? इकोसिस्टम. Ecosystem is a system that resulting from the interaction of living and non-living factors. Already we have discussed that environment, it contains living factors and non-living factors, and they are always interact with each other either positively or negatively. So the system that resulting from that interaction of living and non-living factors is known as your ecosystem. Okay. So ecosystem is different types. Again, that is natural ecosystem or man-made ecosystem. Natural means natural, but man-made means either crop field or park, or any type of such examples are comes under your man-made ecosystem. So this ecosystem contains living and non-living factors, and that is known as your structural feature of ecosystem. When you consider about different type of factors, then it is known as your structural features. So structural feature means abiotic component or non-living factors, and biotic component means living factor. Abiotic factors are either inorganic components
like your carbon, nitrogen, carbon dioxide, or water, etc. Organic compounds like your protein, carbohydrate, lipid, fat, etc. Then climatic factor means temperature, humidity, light, etc. So these are the abiotic factors or non-living factors. Biotic factors means again it is categorized into two types, that is autotroph and heterotroph. Autotroph means self-nourishment. It means any organism that nourish itself, prepare its own food, then that is known as your autotroph. They are also known as your producers. Heterotroph means those organisms who are depends upon other for their food materials. जैसे कि ह्यूमन बींग हम एग्जांपल ले सकते हैं. तो प्रोड्यूसर जो है उसका एग्जांपल क्या है? प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, देन सम algae जो blue green algae specifically, and rather than some bacteria are also prepare their own food, like your photosynthetic bacteria or chemosynthetic bacteria. Photosynthetic means those bacteria who are used light for their food preparation, and chemosynthetic means those bacteria who are used some chemical substances for their preparation of food materials. So those organisms are known as producers because they produce food themselves and also provide food. And heterotroph means that is depends on their food material. They also categorize into two types, that is consumer and decomposer. Consumer means they simply eat anything. A consumer, they are again subcategorized like herbivore, carnivore, and omnivore. Herbivore means those organisms who generally depends upon specifically producers or generally the producers as their food material directly. Carnivore means those organisms who are generally herbivore, जिसको हम कहते हैं शाकाहारी, मांसाहारी and सर्वाहारी. शाकाहारी मीन्स जानते हैं तो सिर्फ प्लांट या हरी घास फूस कैसे खाते हैं. मांसाहारी and सर्वाहारी means both they can take vegetable matter as well as animal matter. Okay. So consider about those biotic factor and abiotic factor in different types of ecosystem. They are varied. Consider about grassland ecosystem, for example. Then in grassland ecosystem, the major producers are grass. But when we consider about pond ecosystem, Ma'am, not clearly audible. clearly audible. नहीं मैडम, Not आपका आवाज clearly क्लियर audible. नहीं आ रहा अभी. अभी अभी 2-3 मिनट अभी सुनाई पहले, देता है किस तरह से? हाँ जी पहले आ रहा था, अभी आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा. 3-4 मिनट हो गया क्लियर नहीं आ रहा. पहले चल रहा था, क्लास ठीक चल रहा था, अभी क्लियर नहीं आ रहा आपका आवाज. क्लियर नहीं है, मैं तो से ही पढ़ा हूँ. शायद नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है या? हाँ जी नेटवर्क होगा आपका, आवाज क्लियर नहीं आ रहा आपको मैम. Okay. So, when consider about any type of ecosystem, either land ecosystem or grassland ecosystem or desert ecosystem, so in each ecosystem, this producer or consumer or decomposer, they are varies because generally they are depends upon different type of climatic condition for their growth and development. So according to the climatic condition and other factors, they are differ from system to system. When we consider about the structure of ecosystem, for example, if a question maybe
found that what is the structure of ecosystem in ponds or in a desert or in a marine sector or in any other ecosystem, then we have to define all those biotic and abiotic component in that particular system. Normally, abiotic components are almost same, but when we consider about temperature, then temperature in some area is maybe high or in some areas maybe low. So that is the difference. When we consider about soil factor, so soil mineral substances or organic matter or any other matter maybe varies from system to system. यहाँ पे अगर हम केंद्रापड़ा को कंसिडर करें तो यहाँ पे आयरन का मात्रा अधिक है, लेकिन कोई और जगह कुछ और ज्यादा होगा. सो इससे सिस्टम जो होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, इकोसिस्टम, इस सब को लेके वो डिफर करता है. सो व्हेन वी कंसिडर अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, all those parameters are described according to that particular system. Okay. Next is decomposer. Decomposer means those organisms who are decomposed or degraded all the materials after the death. Okay. They not only consume, but they also degraded various type of material. And then help in nutrient cycle, like different types of nutrient cycles are there. So they are help in nutrient cycle. So this is the structure of ecosystem. Next one is function of ecosystem. Function of ecosystem means there are different types of functions are generally found in an ecosystem, like your food chain, energy flow, nutrient cycle, then succession, homeostasis. So these are the different type of function. Energy cycle means generally energy is transferred from one organism to another, and it also obeys some principle like law of thermodynamics, first law of thermodynamics and second law of thermodynamics. First law is that energy cannot be created or not destroyed. It only transfer from one organism to another. And it also obeys second law of thermodynamics. Energy is transferred from higher concentration to lower concentration, and during that period, some work must be done. So these are the two principles. Then another is known as a 10% law. 10% law means during the period of energy flow process, almost 10% of main energy transferred to the next organism. For example, when we consider about solar energy, that is 100%. When it falls on Earth's surface, it is only 10 or 10%. Why? Because some amount of energy is back to the space, some amount of energy absorbed by the gaseous particle and other particle that found in the atmosphere. So the rest amount of energy falls on the Earth's surface. That's why it reduces to 10%. Again, from plant, when it transferred to any other organism through the food chain process, then it again reduces to 10%. It means it becomes 1. Because a number of processes are there, like your decomposition or respiration. So in that way, some energy releases. And some amount of energy stored by the plant itself. That's why the rest amount of energy is transferred. जोटा कि हमें जो कहते हैं कि 10% ला, इसलिए. Okay. Next is food chain process. Food chain means when one organism consumes another organism, and the whole process is shown in a picture, then it looks like a chain-like structure. When they are drawn through the process of arrow mark, it shows a picture of food chain. So this food chain is 3 types.
that is grazing food chain, parasitic food chain, and detritus food chain. Grazing food chain means it is generally started from the producer, then consumed by any grazing animal or herbivore, and finally it is consumed by any consumer and decomposer, etc. Parasitic food chain means those food chains are also started from producer, consumed by any herbivore, and that herbivore is the host of any type of parasite, either ectoparasite or endoparasite. Parasite means those organisms who are depends upon other for their survival. Any organism के बिना वो नहीं रह सकते हैं. Either वो organism herbivore के अंदर रहता है और body parts के बाहर भी रहता है. So in that way, either it is known as your ectoparasite or endoparasite. So that is known as a parasitic food chain. Another one is detritus food chain. Detritus food chain is slightly different from all those two types of food chain because it is started from the dead organism or dead materials. So dead materials are consumed by different type of decomposers. So decomposers are known as your detrivores. Then those detrivores are again consumed by any other consumer. So that type of food chain is known as your detritus food chain. Next one is nutrient cycle. Nutrient cycle means different types of materials are just moved in the atmosphere, hydrosphere, and lithosphere in different process, by different process. So that type of cycle is known as your biogeochemical cycle or nutrient cycle. So it is categorized into three types, that is hydrological cycle, gaseous cycle, and sedimentary cycle. Hydrological cycle means water cycle. Gaseous cycle, it means either oxygen cycle or carbon dioxide cycle, nitrogen cycle, etc. Sedimentary cycle means your phosphorus, potassium, magnesium, etc., etc. So in general, when we consider about carbon cycle, carbon dioxide cycle, this type of cycle is always started from atmosphere. When we consider about carbon, so carbon is found mainly in the form of carbon dioxide that present in the atmosphere, that taken by the green plants. Again, through the green plant, it is transferred to any other organism. In that way, it transferred to either consumer or decomposer. So after the death, they are degraded by the decomposer and again goes back to the atmosphere. So that is one type of carbon cycle or carbon dioxide cycle also. Sometimes when they are deposited in the soil, they are converted into coal or petroleum. Then coal or petroleum are extracted from the soil. Again, they are burned by different process, like either in the industrial sector or in the vehicle or in any other way. Then they also goes back to the atmosphere. So it forms a cycle-like structure that is known as your carbon cycle or carbon dioxide cycle also, because in carbon dioxide, carbon is also present. Next is nitrogen cycle. Nitrogen cycle means cycling of nitrogen. As you know, that nitrogen is present in the atmosphere plentifully. Almost the percentage is nearly 78%. But that nitrogen directly not taken by any green plant. And what is the reason? The reason is its bond. Nitrogen is always found in the form of N2. N2 जो होता है, N2 के बीच कुछ bond होता है. So it requires enough energy for the breakdown. एनर्जी जो रिक्वायर होता है, अगर एनर्जी हम प्रोवाइड करें तभी ये एन हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है. सो अगर एन in different form
सॉइल में डिपॉजिट होता है, particularly nitrates and nitrates, then from the soil it is captured by the green plant. So that process is known as your nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो 3 टाइप्स होता है, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिजिकल प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, लाइटनिंग। लाइटनिंग इज द ओनली प्रोसेस बाय व्हिच फिजिकली नाइट्रोजन इज फिक्स्ड। लाइटनिंग की वजह से N जो होता है, N2 जो होता है वो ब्रेक हो जाता है N को, फिर N easily combines with oxygen, then it also combines with hydrogen in the form of nitric acid. It is deposited in the soil. From the soil, green plants are generally absorbed. That is the physical process, but that is the limited process. हर सीजन में लाइटनिंग थोड़ी ना होता है, and requirement is more. So that's why another process is biological process by which generally nitrogen is fixed down, rather than industrial sector or in generally chemical lab. There was a process that is known as your Haber process. By that process, N is fixed down, or N2 is breakdown. So next is biological process. Biological process जो होता है, biological process means some organism must be involved in that process. That's why that is known as a biological process. So, what are the organisms? Organisms are either rhizobium bacteria or some free-living bacteria or मैडम मैडम आवाज क्या बोलते आपका हैं, आवाज क्लियर नहीं आ रहा। कुछ बोलते हैं। हाँ जी, अभी थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। So बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है और इसी टाइप पे होता है, जो इसको कहते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड असिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक जो होता है, symbiotically 2 organisms are involved to fix the nitrogen, and that the best example is rhizobium bacteria and leguminous plant. दाल का जो प्लांट होता है और वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स होता है, उससे हमें लेगुमिनस प्लांट बोलते हैं। तो लेगुमिनस प्लांट जो है, वो लेगुमिनस प्लांट के साथ राइजोबियम बैक्टीरिया एक नोड्यूल फॉर्मेशन करता है, एक स्वेलिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। सो ये स्वेलिंग स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन जो है N2 फॉर्म में, वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो other type is asymbiotic. Asymbiotic means only any one of the organism is fix the nitrogen, that is free living bacteria, azotobacter or clostridium, or any type of blue green algae जो होता है, either oscillatoria, nostoc, anabena. So these are the examples. After nitrogen fixation, next process is ammonification. That nitrogen converted into ammonia. So ammonia again converted into different form like protein, or they are attached in different way and form the protein in the plants. Again, those materials are degraded after the death or by different process, जिसको हम बोलते हैं nitrification and denitrification. So in that way, again, that complex structure converted into simple structure. पहले ये complex formation होता है, then that complex structure again break down to form again inorganic nitrogen. Okay, so in that way, it again goes back to the atmosphere. So nitrogen cycle. This is known as your nitrogen cycle. Similarly, there is also phosphorus cycle.
That is known as your sedimentary cycle. So these are the different type of cycle जिसको हम बोलते हैं different type of functionality of ecosystem. Another one is homeostasis. Homeostasis means self-balancing system of nature. Nature खुद को balance करता है. For example, when we consider about carbon dioxide and oxygen, प्रोसेस को हमने नहीं किया, ये प्रोसेस पहले से है. जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है. हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. सो दैट इज द नेचुरल प्रोसेस. नेचर बैलेंस इटसेल्फ. अभी प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि हम एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये बैलेंस नहीं होता है. फिर हम डिफोरेस्टेशन कर देते हैं, इसलिए बैलेंस नहीं होता है. कोई और एग्जांपल अगर हम लेंगे, फॉर एग्जांपल एनी टाइप ऑफ डिजास्टर हैपेंस. सो ड्यू टू डिजास्टर, जब डिजास्टर होता है तो जो प्लांट है और एनी एनिमल है वो अफेक्टेड होते हैं. लेकिन आफ्टर फ्यू डेज अगेन प्लांट्स आर अराइज्ड. हम जंगल को जाके खुद ना प्लांटिंग करते हैं? नहीं, वो अपने खुद ब खुद उड़ जाते हैं. सो दैट इज द नेचुरल बैलेंस. So when natural balance is there, or that natural balance process is known as your homeostasis. So these are the different type of function of ecosystem. Another one is ecological succession. Succession means already जोटा हम कहली जे succession means the successional process, continual process of various organisms, either plants or animals. ये जो सक्सेशनल प्रोसेस है, ये 2 टाइप्स का होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन. फॉर एग्जांपल, ड्यू टू एनी रीजन, किसी वजह से जंगल में आग लगे तो सारा जल गया. जलने के बाद जो खुद ब खुद प्लांट अगेन अराइज करता है. So that is the successional process, and that type of successional process is known as your secondary successional process. But if successional process are found in a vacant area, new area or barren area, then that is known as your primary succession. Okay. जो हम देखते हैं अभी कुछ प्लांट है, फिर 1 महीने के बाद अगर उसी जगह को आएंगे तो वो सब प्लांट कहीं चले गए हैं, कुछ न्यू प्लांट आ गए हैं. तो ये सब हम नहीं करते हैं, नेचर करता है. तो ये जो कंटिन्यूअल प्रोसेस में कुछ प्लांट बढ़ते हैं, फिर घट जाते हैं और मर जाते हैं. क्यों मर जाते हैं? क्योंकि वो सराउंडिंग को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं. तो जो अडॉप्ट कर सकता है वो सर्वाइव करता है, इसलिए कुछ प्लांट डोमिनेट हो जाते हैं, कुछ प्लांट ज्यादा दिखाई देते हैं और कुछ प्लांट कम दिखाई देते हैं. सो ये जो प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअल प्रोसेस इज नोन एज योर सक्सेशनल प्रोसेस, जिसको नेचर करता है. दैट्स व्हाई दैट इज अगेन कैटेगराइज्ड इनटू प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन. ओके, नेक्स्ट इज इकोसिस्टम एंड ह्यूमन इंटरवेंशन. इकोसिस्टम के साथ हम खेलते हैं, हमारे हिसाब से हम चेंज कर देते हैं, जो डिफोरेस्टेशन कहते हैं, और कुछ भी तरीके से हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कुछ चेंज कर देते हैं. तो वो है ह्यूमन इंटरवेंशन. इकोसिस्टम जो है उस सिस्टम को हम बिगाड़ देते हैं. इसलिए जो स्टेबिलिटी है, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होता है. जब स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होता है, प्रेशर आ जाता है हम पर, क्योंकि जो फूड चेन प्रोसेस है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, उसके हिसाब से वो बैलेंस होता है. अगर वो बैलेंसिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट होता है. स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन नहीं होता है. फॉर एग्जांपल, इफ यू कंसिडर अबाउट प्लांट्स, then it's a principle. When you consider any particular area, then 33% अगर प्लांट रहेंगे वो एरिया में,
तो वो एरिया बैलेंस होके रहेगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जो कि अभी अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया को सर्वे करेंगे तो 33% से वो घट गया है, ओनली 10 या 12% हो गया है। इसलिए जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन नहीं होता है एंड इट क्रिएट्स नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। इसलिए हमारी जो इंटरवेंशन है, हम जो काम करते हैं उसे थोड़ा कम करना चाहिए, सो दैट इकोसिस्टम स्टेबिलिटी कैन बी मेंटेन। ये गया आपका जो सेकेंड यूनिट है। थर्ड यूनिट क्या है? मेजर इकोसिस्टम। सो जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हम देखें कि मैनमेड इकोसिस्टम और नेचुरल इकोसिस्टम। Natural ecosystem, again, because the whole biosphere is a large ecosystem or contains different type of large ecosystem. So that ecosystems are categorized into different types, like your terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. Again, terrestrial ecosystem is categorized into grassland ecosystem, forest ecosystem, and desert ecosystem. Similarly, aquatic ecosystem is categorized into marine water and fresh water. Marine water means salt water, either ocean or sea. And fresh water means, again, that is categorized into lentic and lotic. Lentic means standing water, lotic means flowing water. Standing water का मतलब क्या? मतलब ये जो पॉन्ड है और लेक है, इसका मतलब ये फ्लो नहीं करता है। And flowing water means flowing water. It means either river or stream. Okay. So in each ecosystem, different types of organisms as well as non-living factors, there are varies. That's why we separately discuss that different types of ecosystem or major ecosystem. So when we consider about, for example, forest ecosystem, forest is again divided into different types of forest, like your coniferous forest, temperate forest, deciduous forest, or subtropical forest, etc., etc. And in each forest, plants are varies, animals are also varies. For example, हम इक्वेटोरियल रीजन को लेते हैं। इक्वेटोरियल रीजन जो है बीचों बीच हमारे ग्लोब के, वो उसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? वो गर्म है और बारिश भी ज्यादा होता है। इसलिए उसी एरिया में जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत लंबा होते हैं, उसका हाइट बहुत ज्यादा होता है, घना भी होता है। So that is the specific feature of that area or that type of forest area. But when we consider about polar region, for example, any tundra region, पोल को चले आए, either नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वहां पे टेम्परेचर क्या है? ठंड है। तो ठंड के हिसाब से वहां पे जो ट्री है वो अलग है। इसलिए फॉरेस्ट का हम जब फॉरेस्ट कंसिडर करते हैं, फॉरेस्ट में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी कंसिडर अबाउट केंद्रापड़ा और सिमलीपाल और अनुगुल और एनी अदर एरिया, सो इन दैट एरिया जो फॉरेस्ट है, यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट है। सो मैनग्रोव फॉरेस्ट मीन्स मैनग्रोव टाइप्स आर some special types, some special feature also, like your इस जगह पे जो मैनग्रोव है वहां पे हेंतल नाम के एक पौधा ज्यादा दिखाई देता है। Again, it contains different types of mangrove plants and animals. Birds are there. Number of migratory birds are also comes here. So, and that type of plants are salt tolerant. क्योंकि ये जो मैनग्रोव्स है यहाँ पे वो दिखाई देते हैं कोस्टल रीजन में, तो यहाँ वो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट है नॉर्मली, एंड बहुत छोटा है लेकिन घना है, ये इसकी क्वालिटी है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज इट्स जर्मिनेशन प्रोसेस, दैट इज विविपारी जर्मिनेशन एंड न्यूमाटोपोर्स। क्योंकि वहां पे सॉइल जो होता है वो वाटर के वहां पे that soil is inundated with water. So as it is inundated with water, then what happens? Soil air
reduced in that region. For a particular plant growth, air is required, water is also required. But in that region, soil air is almost nil or very negligible amount. That's why in that region, that special feature is found is nematophores. It means the root structure is generally found in the upper part of the soil. जो रूट होते हैं वो सॉइल के नीचे होते हैं, लेकिन यहाँ सॉइल के ऊपर होते हैं with some pore. By that pore, they take air from the atmosphere for their growth. So that is one of the important feature of mangrove plant. Then another is vivipary germination. क्योंकि वहां पे air Ma'am, your voice is not audible. Ma'am? Ma'am? क्या आप सबको आवाज सुनाई दे रही है क्या? नहीं, शायद इनका 1 घंटा का क्लास होगा, शायद क्लास लिंक कट गया होगा, नहीं तो काट दिया होंगे उधर से, इसीलिए नहीं आ रहा है शायद, यही हो सकता ना। हेलो। हाँ मैम, चले गए, लीव कर लिया। हाँ मैम, चलो थैंक यू। हाँ मैम, लीव कर लिया। लिंक हो गया, खत्म हो गया ना लिंक। हाँ, कब शुरू होगा? Anybody knows? मैम ने लेफ्ट हो गया है क्लास, मतलब अच्छा चलो, खत्म है। ओके, खत्म। Is there another हाँ जी, मैंने कल शुरू होगा क्लास। चलो। Okay, thank you. तो ये है तो आपका मेजर इकोसिस्टम आप देखेंगे, वही देखेंगे और किताब देखेंगे, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हम अच्छा हेलो। के बाद अगर डाउट्स आए तो मैम आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। मैडम आपनको साउंड जमा ही आसुनी, बारंबार कटुची मैडम। मैडम को प्रॉब्लम अछि। प्रॉब्लम देखी दारू काटुचंती ना कौन? नहीं मैडम तो लाइन अच्छी बर्तमान है आज्ञा लाइन अच्छी किंतु लाइन रे अछंती, नेटवर्क प्रॉब्लम होची मैडम को। हाँ जी, नेटवर्क प्रॉब्लम होची, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होची ना। फोन केंद्र करे माने अछि भाई फोन से अछि तक फोन टा केना नो नाटा नहीं। हैं हाँ मैडम, मोनालिसा मैडम, हेलो हेलो। Sir, madam, voice is not audible. I think due to internet problem, our Yes, sir. voice could not reach the target group. Okay, just I am
एक टेलीफोन पढ़ाइले नहीं तो पढ़ाइले बोधे नहीं okay my dear learners, I think due to internet problem and the classes could not continue, so tomorrow we will take the class at the right time, so you are requested to attend the class in the right time. Okay, am I Okay, sir. audible? Am I Okay, sir. audible? Ajit Yes, Kumar. yes, yes, sir. Okay, you should join. That is in the right time is 6 to 6.5 minutes, Okay, sir. so that it will be better to complete the course. Okay. Madam is always ready, but that course could be completed within the stipulated time. हाँ मैडम, हाँ नेट प्रोब्लेम है किसी असुविधा नहीं ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କାଲି କ୍ଲାସ ନେବେ ଆଉ ହଁ ସେ କ'ଣ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆଉ ହଁ ରଖୁଛି ମୁଁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛି हाँ dear learners, we will start the class at 6 o'clock. So all are requested, first of all you should write your enrollment number and your name, and we will start exactly 6.5. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. राइट टाइम रे 6:05 रे हम स्टार्ट करंतु प्रोग्राम आ 1 by 1 आसला बेलकू हमको 10 जण पिला होउनी से जण मिनिमम स्ट्रेंथ न हेले हम क्लास करि परिबुनी तेणु समस्ते 6टा रे हम ओपन करछु एवं 6:05 भितरे हमर क्लास आरंभ करिवा कथा तेणु समस्त Okay, sir. अनुरोध जॉइन करियो माने संग संग तुमर रोल नंबर एवं तुमर नेम ए दीटा जिंस संग संग लेखिबो कि मु आज क्लास रे एबे